Hi guys, good evening everyone. I hope you can see me and hear me clearly. So the three of us are going to be live today, and this is our second live on YouTube through Zoom. And this session is going to be about UPSC Commerce optional financial management. So what we are doing is we are picking up different subjects, different topics, one at a time, and we are taking doubts of all the students in these sessions one by one, of all the enrolled students. If there are not enough doubts, then what we do is we come together and we talk about the topic that we are supposed to be taking doubts on. So this is what we do. And to know more about UPSC Commerce or UPSC Management Optional, you can go to the website www.anujindal.in. Okay, I'm putting it in the chat box. You can go to the website and you will find details about UPSC Commerce and UPSC Management Optionals there. Okay, so please, Shubham and Harneet, if we have any doubts, we can discuss them. If you have any doubts already in the Telegram group or otherwise, we can talk about financial management in general. What are the important topics for UPSC Commerce Optional? What are the important topics for UPSC Management Optional, and how do we tackle it? Yes, so hello everyone. So if we talk about financial management, there are various important topics such as capital budgeting decision, very, very important, where we have a lot of capital budgeting topics such as NPV, IRR. They are very, very important. Conflict between NPV and IRR. What are the situations where you should be using NPV, IRR? Then you have profitability index, accounting rate of return. So majorly the capital budgeting decisions are divided into two parts, the traditional and the modern one. Traditional basically do not follow the time value of money, whereas if you talk about the modern techniques, they usually follow time value of money. So you just don't have to understand these concepts. You have to be very clear upon the decision rule. What is the decision rule when you're using these capital budgeting techniques, and in what is the objective based on which you're going to choose. For example, if I take about profitability index, if there is a situation of capital rationing when the firm has a shortage of fund, then and you have to do ranking, you have to choose from various projects, and the projects are divisible. So let's say this is the question that is being given to you, and nothing is being mentioned that what is going to be a suitable capital budgeting technique. So you will have to be very clear that in this particular situation, profitability index is the only method that you're going to use. Similarly, as we proceed further, we have various capital structure decisions such as NOI method is there. Then we have NI national NI income method. Then we have hypothesis. Then we have various other methods. And then finally, we move to the most important topic, that is the dividend decision, where we have Gordon model, Walton model, model. All of these models are there. So you have to be very thorough with them. Specifically, if I talk about capital budgeting, capital structure, and your dividend decision model, the numericals will also have to be taken care of. They also have to be method. Then because whether we talk about management course, UPSC management, or specifically if we talk about commerce also, there are going to be numericals of around 10 marks from these chapters. So 10 marks per chapter you can devote. 10 marks question is there from financial management, from capital budgeting usually. Then there is one question from dividend decision also. So at least for these three chapters, that is capital structure, capital budgeting, and dividend decision, you have to be very thorough with numericals. And the numericals are not a very difficult one. Simple, straightforward questions specifically related to formulas. So I think if you're covering these topics, both conceptually and a lot of practice with numericals, you will be able to do that. Okay, Hadid sir. हाँ, तो एज सेड बाय शुभम सर, बहुत ही ब्रीफ में उन्होंने सिलेबस को पूरा कवर किया और बहुत ही सही कि लाइक जो हमारे डिविडेंड डिसीजन के मॉडल्स हो गए, जैसे गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, जो हमारे रिलेवेंस और रिलेवेंस की बात करते हैं, उनको बहुत थोड़ा में कवर करना जरूरी है। अब मैं बेसिक बात करूं कॉमर्स के यूपीएससी में, जब हम पास्ट ईयर एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ, अगर हम प्रैक्टिकल को छोड़ें तो थ्योरी पे भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो हम कभी कभार क्या सोचते हैं, अगर हम कॉमर्स को ऑप्ट कर रहे होते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट एफएम और अकाउंटिंग, अबाउट जिसमें प्रैक्टिकल्स है हमारे। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी और एफएम में देखें तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। और अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स के कुछ पेपर्स देखें तो हमें ब्रीफ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि विद इन लाइन्स उन्होंने स्टेटमेंट उठा के पूछी हुई थी जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जो जनरल रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। वो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस भी पूछने जाते हैं बहुत बार। So if we have doubts, then we will continue with that.
I think बहुत important बात बोली है, if I may, 1 second. If I may interfere in this, I think it's a very important thing that we talked about, that contradictory statements that are being. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Okay, okay. So the contradictory statements that are there in the syllabus, in the specific topics, I think they are very very important, and it's a certainty that they are going to ask some of these statements, questions from these statements. Plus, I think theory is very very relevant. अगर हम if we talk about UPSC Commerce optional, then am I right in saying that the weightage is somewhere between 140 to 170 marks out of 400 marks, not 250? Yes, I think I cannot hear you. So what I'm saying is the weightage as per my knowledge in UPSC Commerce optional is 140 to 170 marks out of 400 marks, and out of that, the weightage of theory is still very high compared to the numericals. So we still have to keep focusing on the theory part as well, simultaneously along with the numerical portion. You need to be thorough with your numerical part, but at the same time you need to make sure that you've understood the concepts. This is something that we miss, whether we have done our chartered accountancy, whether we have done our bcom or mcom. I think we focus too much on the numerical portion because टीचर्स हमको पढ़ा देते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, दिस इज हाउ यू नीड टू गो फॉरवर्ड. बट वी fail to figure out how to solve, how to understand the conceptual theories behind those topics. I think that is what you need to focus upon. And that is what we are focusing upon in the course, because the demand of the examination is such. Believe me, UPSC Commerce optional is one optional that has the ability to give you 300 plus marks very, very easily. The only thing that you need to do is cover the syllabus thoroughly and cover the syllabus smartly. If you are able to understand what is the demand of the demand of the papers and prepare accordingly, there is no point or no way that you will get less than 300 marks. You just need to be smart enough to understand कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है. मुझे पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, मुझे बस एग्जामिनेशन की डिमांड को फुलफिल करना है. Automatically you will end up completing the syllabus, and at the same time simultaneously you will complete the demand of the examination as well. What do you think, Harneet and Shubham? Sir, rightly pointed out, because जैसे हम we were going through the past year analysis the other day, so we noticed कि जो 10 marks के questions आते हैं specifically from financial management, जिसके अंदर दो 3 questions starting के आते हैं. So they are very straightforward questions, but what you have to specifically write there makes a lot of difference in what you're gonna score. So for instance, अगर question पूछा हुआ है that time value of money is very crucial for decision making. Now we have to specifically identify कि time value of money तो बहुत general concept हो गया. But what are they trying to hint? For example, if you're talking about dividend decision, then they are majorly focusing on bird in eye theory, bird in hand theorem basically. So वो हमें linkage create करना जरूरी है. If you are writing a very generic answer, time value of money, तो फिर marks भी I think sir generic ही मिलेंगे. So we have to be very specific in identifying what is being expected out of us from UPSC side. So I think वो identify करना जरूरी है और उसके accordingly specifically theory में answers लिखने जरूरी हैं. Then only we are going to get the marks, else not. Also sir, एक और चीज जो मैंने notice करी है, जो practical में we all tend to miss out, कि जनरली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर निकल के छोड़ देते हैं. व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग इन द पेपर ऑफ यूपीएससी कि वो लास्ट में एक वर्ड डाल देते हैं, कमेंट और जस्टिफाई. आई थिंक वो एक, आई थिंक उसके वेटेज जरूर होते हैं 2 से 3 मार्क्स, और लास्ट में हमें बताना पड़ता है दैट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट. सो लेट्स से अगर डिविडेंड की कुछ वैल्यूज आ गई, लेट्स से कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होके आ गया, सो व्हाट इज द मेजर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ द फर्म इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन. आई थिंक वो लास्ट में एक समराइज करना बहुत जरूरी है, जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 2-3 मार्क्स शायद स्ट्रेट अवे कट जाएंगे. सो आई थिंक वो ऐड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को, और ध्यान रखना जरूरी है दैट दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. I think that's very important. What you've talked about is very very correct. There is a specific reason that they're putting a specific connotation at the end, whether it is justify, whether it is discuss, whether it is comment, and
the one thing that is common in all of these is that you need to talk about both the sides. Who is a civil servant? A civil servant is a person who takes rational decisions. That's the only thing that differentiates a civil servant from normal people. Normal people are affected and driven by their feelings, emotions. A civil servant is expected to be indifferent. Max Weber की theory है आपने पढ़ा होगा. Now, if he wants to be indifferent, he needs to take rational decisions. If he wants to take rational decisions, he needs to consider both the positives and the negatives. If he wants to consider both the positives and negatives, he needs to at least specify them. उनको अलग अलग डालना पड़ेगा उसको. That is what they're looking from you. Number one. Secondly, commerce optional है. The people who are going to be checking your paper are professors in college. See, it's very important to understand what the examiner demands from you. What is the psyche of the examiner? यहाँ पर examiner की psyche बहुत simple है. वो एक college का professor है. Academic answers उनको अच्छे लगते हैं. That is what they have been checking their entire lives and that is what they like. In addition, उसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा एलिमेंट यूपीएससी का, क्योंकि अगर वो यूपीएससी का एग्जाम चेक कर रहे हैं तो यूपीएससी से बोलेंगे भाई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो. हाउ डू वी नीड टू चेक? डू वी चेक इट जस्ट लाइक यू आर यूनिवर्सिटी पेपर्स और इज देयर अ डिफरेंट अप्रोच? तो यूपीएससी बोलेगा नहीं, दिस इज अ सैम्पल आंसर, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. उसमें थोड़े डायनामिक एलिमेंट्स होंगे, थोड़ा रैशनैलिटी इन्वॉल्व होगी, थोड़े पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मिक्स होंगे. ओके, so all those थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दोज सैम्पल आंसर्स. तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा यूपीएससी का पेपर है, हाई लेवल का पेपर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. In addition to a normal academic answer, I'm expecting from the student some kind of reality check, some kind of higher level of analysis. अब हायर लेवल ऑफ एनालिसिस कैसे होगा? पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों दिखाओगे या साइड ए साइड बी दोनों दिखाओगे तो बेटर लेवल ऑफ एनालिसिस हो गया. That is all that is expected. You need not do anything starkly different to score high in UPSC Commerce. आपको बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और थोड़ा सा मसाला डालना है उसके ऊपर, जो कि ऐसे टर्म्स जो शुभम ने बताए अभी, डिस्कस, जस्टिफाई, इन सब में एक कॉमनैलिटी होती है कि आपको दोनों साइड्स डिस्कस करनी होती है, दोनों साइड्स के बारे में बात करनी होती है बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन. सो आई थिंक यू कैन वेरी वेल डू दैट, and that ways you justify or you satisfy the need of the examiner so that he can give you better marks. That is all that you need to take care of. So Arjit ने क्वेश्चन पूछा है, how to address theory questions in accounting. I think Harneet can answer this question very very हाँ, well. तो सर पहले मैं एंड करने से पहले एक चीज ऐड और कर दूं. सो यू आर सेइंग कि कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के साथ साथ हमें क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना भी बहुत जरूरी है. सो सपोज अगर हम इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक हम इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, लाइक कि वो सिक्योरिटीज में इशू कब करते हैं प्रीमियम पे, कब डिस्काउंट के कुछ रूल्स, तो इंट्रोडक्शन भी देंगे तो और आंसर को वो ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बना देगा. तो आंसर को ये होगा. अब अरिजीत का जो क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग के क्वेश्चन को कैसे करें, देखो जब हम कवर कर रहे हैं सिलेबस को तो सबसे पहले हम पास्ट ईयर एनालिसिस करेंगे. और अब पास्ट ईयर हमने क्या देखा कि लेट सपोज अगर मैं बात करूं, मैं राइट शेयर्स पढ़ने बैठा तो मुझे राइट शेयर्स को प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्या करूंगा, मैं एंट्रीज पढ़ लूंगा. बट वो ना करके मुझे उसको अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो वो भी बनाना आना चाहिए. अगर डिफरेंस आ जाए कि भाई राइट शेयर और बोनस शेयरों में क्या डिफरेंस है तो वो भी प्रिपेयर करके चलना चाहिए. मींस हमें स्टार्टिंग से ही जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स या फिर स्कूल में तो हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं. बट यहाँ हमें दोनों इक्वल लेके चलने पड़ेंगे कि assumptions लेनी पड़ेंगी कि हाँ ये क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करेंगे. और रही बात बाकी थ्योरी क्वेश्चंस की, अगर हम पास्ट एनालिसिस करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हमें पता है कि हर बार 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आना ही आना है. तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करते वक्त वो माइंड में रखना है कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का या किसी उसके पॉइंट का, जैसे डेप्रिसिएशन का शॉर्ट नोट आना, तो उसको हम साथ साथ ही प्रिपेयर करके चलें. तो प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसके थ्योरी के क्वेश्चंस को भी लर्न और समझना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में. और क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इजी आते हैं अगर आप अकाउंटिंग में देखो, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो इतना टफ कुछ नहीं होगा. बट हमें याद करके चलने हैं पहले से. आई थिंक यहाँ पर एक बहुत बेसिक सी चीज़ हम भूल रहे हैं जो कि हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या उससे पहले किया करते थे. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी फॉरगॉटन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड दैट थिंग इज़ कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे ना,
कॉलेज में या स्कूल में, तो हम पास्ट ईयर पेपर्स को समझ के जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते थे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते थे, उसके नोट्स खाली नहीं बनाते थे, साथ में ये भी देखते थे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स बना के लिख लेते थे. I remember very, very clearly. I was in UPSC, some UPSC class in 2011-12, I think, long time back. और एक स्टूडेंट आए थे who had cleared the examination with some 200 rank, very good rank. Or not 200 rank, I think he became an IS. Yes, he became an IS and he said, किसी ने पूछा था कि कैसे इतने अच्छे नंबर आए, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि मैंने 200 से 300 क्वेश्चंस खुद क्रिएट किए थे सिलेबस में और उनके आंसर्स खुद क्रिएट किए थे. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. वो आप कॉलेज में कहीं ना कहीं करते थे, बट वो कॉलेज में हम फोर्सफुली करते थे पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू. यहाँ पर आपको वॉलंटरीली करना है कि आप खुद क्वेश्चंस बनाएं कि भाई ये टॉपिक पढ़ा है, AS पढ़ा है, AS3 पढ़ा है, AS4 पढ़ा है, डिप्रिसिएशन पढ़ा है, इन्वेंट्री पढ़ा है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स मैं लिख सकता हूँ. तो अगर वो एक्सरसाइज आप एक स्पेसिफिक नोटबुक में करते हुए चलेंगे ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो एंड में आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद आपके पास 200-300 क्वेश्चंस हो गए एंड दोज क्वेश्चंस आर इनफ. वहीं से पेपर आपका बन के आना है. यू नो वेरी वेल, पास्ट में भी वहीं से आया है, लैंग्वेज चेंज होगी बट आंसर सेम रहना है. सो दैट इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, कि पहले ही आपने पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना लिया, आंसर बना लिया, उसके थ्रू आप इजीली क्रैक कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें. Arjit is asking another question. In management optional last year, there were theory questions with respect to accounting as well as in marketing. In 2021, there was a question 8A and your view on management optional, how to approach. ये तो अलग question हो गया. So he's basically asking कि theory questions जो accounting में पूछे गए थे, how to handle those. I think that has already been answered by Harneet sir very well. मार्केटिंग में आई थिंक शुभम सर कैन टॉक अ लिटिल अबाउट मार्केटिंग में थ्योरी क्वेश्चंस कैसे देखते हैं. उसमें तो थ्योरी क्वेश्चंस ही होते हैं. See, if I talk about specifically about marketing, the very first thing in any answer writing of theory is to tell the person checking your copy once you start writing that you have understood the question. कई बार हम गलती क्या करते हैं that we straight away jump to writing the answers and हम concepts explain करने लग जाते हैं. First, starting 2-3 lines introduction, जैसे हरनीत सर ने बोला, you should give that hint to the person checking, the examiner, that you have understood the question. Then you start with writing the concepts one by one and specifically noting what is being asked. और अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं स्पेसिफिकली, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एज. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रांडिंग, कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, या फिर अगर आप पोजीशनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टॉपिक के अंदर ऑलरेडी पहले से ही आपके 2 से 3 एग्जाम्पल पहले से प्रिपेयर्ड. बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्लियर, मतलब पहले से आपने तैयारी अगर नहीं कर रखी है, उस मोमेंट पे आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू राइट इट. I have been reviewing a lot of answers on the Telegram group जो भी स्टूडेंट्स देख रहे थे, और एक ही कॉमन मिस्टेक थी कि they just write the entire concept but they don't give examples. So हर पॉइंट के अंदर जो भी आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके अंदर एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी हैं. और आई थिंक अगर आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे. सो जो भी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्जांपल्स हैं कि रिसेंटली क्या नए ब्रांड्स आ रहे हैं, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस डोमेन्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, या फिर वो आईफोन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में हो, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. उन एग्जांपल्स को रिलेट करना सीखिए और ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए कि ये एग्जांपल्स यहाँ पे फिट इन हो. If you are able to identify the question properly, if you are able to, second, if you are able to write those concepts, explain those concepts properly, thirdly, you're connecting it with real life examples, I think these 3 things are more than sufficient to score good marks in any theory subject, not just marketing. So इन 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखिएगा. डोंट बीट अराउंड द बुश, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि जैसे हम ग्रेजुएशन में कर देते थे कि 4 पेज भर दिए, बीटिंग अराउंड द बुश कर दिया. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन यूपीएससी. एट लीस्ट stick to the point, what is being asked in the question, give a lot of examples and explain the concepts clearly. एक बार एग्जांपल एक्सप्लेन कर लिया, लास्ट में आप 2-3 लाइन में समराइज कर सकते हैं, जस्ट टू कंक्लूड दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन. आई थिंक ये एक फॉर्मेट बहुत अच्छा हो सकता है इन एनी थ्योरी एग्जाम, नॉट जस्ट मार्केटिंग. आई थिंक मैं एक बात समझ पा रहा हूँ यहाँ पर. वेरी वेल सेड. आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ें शुभम सर ने आंसर कर दी हैं. अरिजीत को मैं एक बात बोलना चाहूँगा. ही इज आस्क्ड अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि जनरलाइज्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे आंसर करें. उसके पीछे की जो कहानी है उसको उस तक जाने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल.
आपने मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. There was a question in 2013 or 14 or 15, I believe, I don't remember clearly, where चेस्टर बर्नार्ड की जो थ्योरी है उसका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वट एवर ही सेड अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, दैट वॉज मैंशनड. उनकी वो जो स्टेटमेंट है बस वो मैंशन थी और उस पर लिखा हुआ था कॉमेंट. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट द स्टेटमेंट itself, I believed and I felt that I should be writing about what is acceptance theory given by Chester Bernard. That is all. तो मुझे आइडिया निकालना है कि उस स्टेटमेंट से या फिर जो भी बात लिखी गई है क्वेश्चन में, उससे मेरे सब्जेक्ट पे कहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है. दैट इज ऑल दैट आई नीड टू डू. एंड देन आई फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, because that is what the question is demanding. The question is demanding that I talk about acceptance theory as given by Chester Bernard. ठीक है ना, कि जब तक अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक वो अथॉरिटी लेजिटिमेट नहीं होगी. दैट्स व्हाट ही सेड. उसके ऊपर मुझे डिटेल में बात करनी है. ऐसे ही हेयर आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर व्हाट द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज. यू हैव रिटन हेयर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. So I think he is talking about some aspect of marketing, right? I think Shubham sir is more specialized to be talking about this, कि कौन सा aspect of marketing is being connected with this statement. जो भी marketing का वो aspect connect हो रहा है with this statement of everything is fair in love and war, you connect with that and then you forget about the statement, and then you just talk about that concept. That is what the examiner is looking for, because eventually the examiner out here is an expert in commerce or management. So he wants you to write an academic answer. He does not want you to write a general studies answer. Okay, we have to be very, very clear about this. I hope that answers the question. Okay, I think we can stop the session. We have already discussed for almost 30 minutes. We have another session coming up for UPSC management optional, and we will be taking that up very, very shortly. We'll be starting with UPSC management optional discussion as well. I think अरजीत ने जो marketing की बात की है वो management optional का part है, commerce optional का part नहीं है. But I'm very glad that he's asking questions related to management optional as well. I will pick that up probably in the management optional session that is scheduled at 5:30. Okay. I hope majority of the questions related to financial management are clear now. जो भी बचे होंगे, we will keep talking about that in the future videos as well on UPSCpedia. So जो भी students हैं, they can go to Anuj for the courses and on UPSCpedia on YouTube channel for specific doubts like these, doubt sessions like these, जहाँ पे हम अलग-अलग topics को उठा रहे हैं and we're talking about that one by one. ठीक है? Shubham sir or Harneet sir, anything that you want to discuss? So that's all. I think जो अरजीत का क्वेश्चन है वो हम मार्केटिंग सेशन में ले लेंगे, तो probably we can discuss it further. ठीक है, चलिए. All the best guys. Take care. Bye bye. जय हिंद. Thank you.